4 ना, हाँ। 4 PM के से कहाँ तक किया था वैसे हम लोगों ने? एनिलीन डज नॉट शो। ओके, चलिए राइट। नेक्स्ट डाइजोनियम सॉल्ट्स। अच्छा गाइस, am I ऑडिबल? एक बार कुछ तो बोलते हैं आप लोग, कृष्ण प्रिया एंड सफिया। Yes, Yes, sir. sir. ओके फाइन। So what are diazonium salt? Diazonium salt, they have alkyl or aryl group. R can be alkyl as well as aryl. And we have nitrogen that is triply bonded with another nitrogen atom. And this nitrogen, which is having 4 bonds, it will get a positive charge. Now this positive charge will be stabilized, or it will be countered by a negative charge on X negative ion. Now here the X can be a plenty of things. Mostly it is either chloride or it is bromide. But it can also be HSO4 negative, or it can be BF4 negative. ठीक है? So all of these anions can be present instead of X. The R that we are having can be either alkyl or aryl. ठीक है? Now, after this, the first point that we will write is regarding the alkyl diazonium salts, which are quite unstable. So please write alkyl diazonium salts are highly unstable and they react with moisture to form alcohol. But when we talk about the aryl diazonium salt, these are quite stable due to resonance. Aryl diazonium salts are stable at low temperature due to resonance. Due to resonance. नेक्स्ट आ जाएगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे. Method of preparation is quite simple and the reaction is known as diazotization of amines. Diazotization of amines. In this we take benzene ring, that is with NH2 plus NaNO2 and HCl, and we do the reaction at low temperature, that is around 0 to 5 degrees Celsius, and this gives you benzene diazonium chloride. N2 positive and Cl negative plus NaCl and water. NaCl and water. Now this compound is known as what? Benzene diazonium chloride, which is also known as BDC. Okay. After this, you will write the chemical properties of BDC. Benzene diazonium chloride. Raise your hand once you're done, then I will start the
chemical reactions. Okay, both of you are done. Now, in chemical properties, the first reaction that we are going to look at is known as Sandmeyer reaction. Now, we have seen Sandmeyer reaction in haloalkane halorene chapter also, but here we are going to learn about a new reactions in Sandmeyer also. So there are three reactions, and all of them are known as Sandmeyer reaction, in which benzene diazonium chloride or benzene diazonium salt, X negative, it is going to react with some reagents. And what are those reagents? Just give me a second. ठीक है, so the three reagents that we are having, पहले है आपके पास cuprous chloride, Cu2Cl2, small cuprous chloride in the presence of HCl. ठीक है, cuprous chloride, or we can use cuprous bromide, which can be written as like this also. CuCl लिखा रहा है चाहे Cu2Cl2 लिखा रहा है, both of them are same thing, the presence of HBr. And the other is cuprous cyanide, CuCN, in the presence of KCN. ठीक है. Now, what are these going to give you? These are going to give you molecules which are having the benzene ring as it is. And this benzene ring will be having, when you react with cuprous chloride, you will be having chlorine. When you react with bromine or cuprous bromide, you will be getting bromine here. And when you react with cuprous cyanide, we will be getting CN molecule here. Okay, so as you can see, this is a very important reaction, cuprous cyanide wala, because here there is an increase in carbon atom, है ना. अब benzene, अब phenyl जो ये group है ना, this group is known as phenyl group, और ये जो आपके पास benzene ring with carbon atom, ये benzyl आ गया. So you can go from benzyl, you can go from phenyl to benzyl, एक carbon atom बढ़ा सकते हैं. ठीक है, this reaction is quite important. If this is a very similar reaction as we did for KCN वाला जो reaction था ना हाल के साथ, उसी तरह से similar reaction ही है. Now the other reaction is known as Gattermann. All of these three reactions are known as Sandmeyer reaction. ठीक है, अब उसके बाद दूसरे किस्म का जो reaction आता है, that is, it is known as Gattermann reaction, not Gattermann Koch, but only Gattermann, Gattermann, Gattermann or double N, I don't remember exactly. Gattermann reaction. Now the reactant is same, even the product is also same, but there are not three reactions. We have only two reactions in the Gattermann reaction. Okay, and the reagents are a bit different, not too much different, but it is a bit different. ठीक है, so the reactant are the same. अब आपके पास reagent में क्या है यहाँ पे? You have just copper in the presence of HCl, and here you have copper in the presence of HBr. ठीक है, so these are the two reactions. Aslan, take a screenshot, and there is a few bit of topics that we have done previously also. What's happening, Aslan? थोड़ा लेट हो जा रहे हैं आप आजकल. सर आज लेट आया था क्योंकि इथरनेट मेरा वायर्ड कनेक्शन होता है ना, तो जो इथरनेट से कनेक्टेड है ना, वो मेन सॉकेट से थोड़ा लूज था. वो डालने में थोड़ा अजीब है, तो मुझे पता नहीं कैसे डालते हैं ठीक से. फिगर आउट कर लेता हूँ ना. अच्छा ठीक, नो प्रॉब्लम. नहीं, यूजुअली यू आर ऑन टाइम ना, इसलिए भी हम पूछ रहे थे कि जनरली आप टाइम पे आ जाते थे, लेकिन कल भी थोड़ा सा आपको लेट हो गया था और आज भी. खैर, दिस इज Gattermann reaction. These two are Gattermann reaction, and above we have these three reactions which are Sandmeyer reaction.
तो देयर इज जस्ट सब्स्टिट्यूशन, डाइजोनियम जो ग्रुप है ना N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव, उसके अलावा फिर बाकी चीजें आ जाती हैं यहाँ पे. प्लीज राइट दिस डाउन, देन यू विल रेज योर हैंड वंस यू आर डन. Yes, Krishna Priya, raise your hand once you're done. Okay. Now, right, next. Other subs. अच्छा, एक काम किया. Arslan, you also take a screenshot of this part. I'll wait for 5 seconds. 5, 4, 3, 2. Yes, sir. Right, next. The third type of reaction that we are going to look is other substitution. Other substitution of diazonium group. ठीक है, other substitution of diazonium group. जैसे we have here N2 positive and Cl negative. अब इसके बाद we are going to look at some reagents. एक हो गया. दो हो गया. आई थिंक थोड़ा नीचे लिखा देखते हैं. There are total of 5. So let me first of all get this vertical flip. And then one in the middle. ठीक है, चलिए. सो हमारे पास जो सबसे पहला रिएजेंट है that is Ki, potassium iodide. This reaction we have seen in haloalkene halorine chapter. We have benzene ring and diazonium group को कौन replace कर देगा? Iodine. ठीक है, iodine is going to replace the diazonium group. ठीक है, चलिए let me एक काम करते हैं, थोड़ा सा ना स्पेसिंग बढ़ाने के लिए let me increase the size here. इतने में काम नहीं चलेगा. We have to need I think that will be this will be enough. ठीक है. See here. पहला है आपके पास Ki, potassium iodide. ठीक है. In this we have the benzene ring. The diazonium group is going to be replaced by iodine. ठीक है, diazonium group is replaced by iodine. And what is this compound known as? This is known as iodobenzene. Next is water, H2. And when you are going to add water, the diazonium group is going to be replaced by OH. That will give you phenol. Next we have जो हमारे पास अगला रिएजेंट है that is water plus H3PO2 or you can just use C2H5OH, ethanol. ठीक है. सो ये इथेनॉल वाला रिएक्शन आपको थोड़ा ज्यादा याद करके रखिएगा because that conversion is going to be quite important.
ठीक है, बिकॉज इन दैट कन्वर्जन यू विल गेट जस्ट बेंजीन. सो थोड़ा सा हम यहाँ पे बता रहे हैं, डाइजोनियम ग्रुप इट इज रिप्लेस्ड बाय हाइड्रोजन. Why it is important to know that it is being replaced by hydrogen? Because MCQ में आ सकता है. What happens when we react benzene disonium salt, benzene disonium chloride with H2O in the presence of H3PO2 or ethanol? Then you will write the disonium group is replaced by hydrogen. At this point, when it is disonium salt, then this carbon atom is not having hydrogen. All the other carbons are having one hydrogen. But as soon as it becomes benzene, the carbon which was having disonium group, it is now having hydrogen. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. हाँ जी बताएं. सत्या Yes. Aslan and Krishna Priya. Yes, sir. Next is in the first step we are going to do HbF4. ठीक है. As soon as we are going to add HbF4, then the disonium group will be replaced. No, not replaced, but rather the Cl negative will be replaced by BF4 negative. Benzene ring as it is, the N2 positive is as it is. The Cl negative will be replaced by BF4 negative. And as you can see, hydrogen from here and Cl from here will be leaving out. After this, if you are going to heat it, then we will be getting fluorobenzene. So the disonium group will be replaced by fluorine. Okay, so this is a two-step reaction. पहले में HbF4, second में heat. A similar type of reaction happens. First of all, we do HbF4 in the first step, and in the second step, we do NaNO2, copper, and heat. This is going to give you disonium. Disonium group will be replaced by NO2. Okay, it will be replaced by NO2. Now let me write the names. This is what? This is benzene. This is fluorobenzene. This is nitrobenzene. This is nitrobenzene. Please copy this down. साथ साथ यहाँ पे ये भी लिख लेंगे that disonium group is replaced by iodine. The disonium group is replaced by OH. Here it is replaced by just hydrogen. Here it is replaced by fluorine. And at last it is replaced by NO2. Done everyone. Safia Aslan and Krishna Priya. लिख लिया क्या आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. Right. The next type of reaction that benzene disonium chloride shows is the coupling reaction. Coupling reaction. ठीक है. Now it shows coupling reactions with phenol as well as aniline, and this can also be used as test. इसको azodye test भी बोला जाता है.
we have benzene ring, N2 positive, Cl negative, plus please don't write now, है ना, इस पे एक बार देख लीजिए, उस बार लिखिएगा, plus we are going to use phenol. और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, एक हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है. So what happens, this hydrogen of the benzene ring जो पैरा में है, that combines with the Cl negative, and this reaction it is done in acidic condition, H positive, और आपको क्या मिलेगा, the benzene ring as it is, diazonium salt का benzene ring as it is, the N2 positive will be having a bond like this, nitrogen, doubly bonded with nitrogen, now singly bonded with the benzene ring, and here you will be having OH. Okay, so this is what, this is p hydroxy azobenzene, p hydroxy azobenzene, and this is orange in color. ठीक है, so this is a distinguishing test for phenol. Phenol को जब आप डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करेंगे, then you are going to get orange color. ठीक है, you are going to get orange colors. The alcohol are not going to show this type of reaction. ठीक है, now we can do the same reaction with NH2, that is aniline. The reaction happens in a very similar way, but the only difference is this happens in basic medium. Here we have NH2, and this is known as, we had hydroxy here, and in this case we have amino group, so we will be writing p amino azobenzene. The color that we are going to get in this case is yellow. Safia, Arslan, Krishna Priya, done? One second, sir. Please write this down. Yes, sir. Yes, Safia and Krishna Priya, done? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक सवाल कर लेते हैं. Better question. How will you convert 4-nitrotoluene to 2-bromo benzoic acid? 2-bromo benzoic acid. ठीक है. So first of all, we have the compound 2,4-nitrotoluene, which is benzene ring with CH3. This is toluene, and in the para position we have NO2. And what we need is, just going to take a few steps. That is why I'm writing like this. We need benzoic acid, COOH, and in the second position we need bromine. So what are the things that we need to do here? We need to first of all add bromine. Okay, add Br, remove NO2 we have to do, and what else we have to do? We have to convert CH3 to COOH. ठीक है, तो ऐड ब्रोमीन करने के लिए ब्रोमिनेशन कर देंगे, रिमूव CH3 को COH करने के लिए KMnO4 in the presence of KOH, that is going to oxidize the CH3 to carboxylic acid. In order to remove NO2, first of all we will convert this to NH2, then diazonium salt, and then we can remove it. ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे. First reaction that we have to do, that we will be doing is Br2 in the presence of FeBr3.
ठीक है, सम कैटलिस्ट। अगर आप सिर्फ Br2 भी लिख देंगे एग्जाम में तब भी चलेगा, दैट इज द मेन रिएजेंट दैट वी नीड। व्हेन यू आर गोइंग टू डू ब्रोमिनेशन, जो टोलुइन जो CH3 ग्रुप्स है, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टली, CH3 इज OP डायरेक्टली, OP। तो पैरा पोजीशन तो वेकेंट है नहीं, तो पैरा पोजीशन रिएक्शन नहीं होगा। द ओनली पॉसिबल पॉसिबिलिटीज आर दीस टू पोजीशंस। नाउ NO2 इज व्हाट? NO2 इज मेटा डायरेक्टिंग, और NO2 जब मेटा डायरेक्टिंग है, देन आल्सो द ओनली पॉसिबिलिटीज आर आइदर दिस कार्बन एटम और दिस कार्बन एटम, है ना, बोथ ऑफ देम आर सेम आल्सो। दोनों ही क्या है? बोथ ऑफ देम आर सेम, दोनों ही इसके लिए मेटा है और CH3 के लिए ऑर्थो। सो वी हैव ओनली वन पोजीशन इन व्हिच द ब्रोमिनेशन कैन बी डन, दैट इज द ऑर्थो पोजीशन अकॉर्डिंग टू CH3। CH3 के मुताबिक दैट इज द ऑर्थो पोजीशन। सो वी विल हैव CH3 as it is, the Br will be added in the second position, and we will have NO2 here. Now after this you need to turn NO2 to NH2. तो इसके लिए क्या करेंगे? SN in the presence of HCl. This will turn the CH3 and Br will be as it is right now. NO2 से क्या बन जाएगा? ये NH2. Then we will be converting this to diazonium salt using NaNO2 and HCl. This will give you CH3 as it is, the Br as it is, and here we will be getting N2 positive and Cl negative. After this, if you are going to add ethanol, ठीक है, 2 carbon atoms and OH, then ethanol replaces the diazonium group with 1 hydrogen atom. CH3 Br, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। At last what we will be doing, we will be adding KMNO4 in the presence of KOH, ठीक है। तो ये CH3 will be oxidized to carboxylic acid. So this is one of the longest conversions that you are having in this chapter. Please write it down. Done everyone? Safia, Arslan and Krishna Priya? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So see, the organic chemistry portion is over for you guys, है ना? Amines is the last chapter in organic chemistry, and solution आपका चल रहा है chemical kinetics. We are going to start in this batch from now, है ना? अब what I think is, देखिए solution chemical kinetics हो जाएगा, then we will be remaining with electrochemistry, ठीक है? We will be remaining with electrochemistry, and coordination हो चुका है आपका D, and where are you guys coming in the DNF block classes? No, sir. नहीं। अरसलान, कृष्ण प्रिया, नहीं। DNF block No. D and F block elements. So there are two chapters. See, solutions भी हो जाएगा, chemical kinetics भी हो जाएगा. Both of these chapters I think could be easily done. But there are two chapters जिसके बारे में doubtful हो जाता है. That is, one is electrochemistry and the other one is DNF block. ठीक है, फिर आप लोगों को see, you guys have to then I don't know. Are you still going to school? कब तक आप लोग स्कूल कब तक जाइएगा? That is
वो मेन एक चक्कर हो जाता है स्कूल जाना। स्कूल कब तक जाइएगा आप लोग? Sir, for me, school will like we won't be going much on February, you know. उसके बाद तो बोर्ड में शुरू होगा ना। हाँ लेकिन फेब में तो हम जैन के बारे में पूछ रहे हैं एक्चुअली। जनवरी सर में। जान में हम्म। तो अभी प्री बोर्ड चल रहा है, एक और बाकी है। उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल शुरू होगा, और हम्म। उसके बाद हाँ, हो गया। बस जैसे प्रैक्टिकल खत्म होगा हम लोग को स्कूल आना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल भी होगा तो मतलब ज्यादा से ज्यादा हुआ तो 4 सब्जेक्ट्स का होगा, किसी का हुआ तो, है ना? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड होम साइंस अगर गया, कंप्यूटर साइंस हुआ किसी का, है ना? सो 4 days ओनली आफ्टर टुमारो, राइट? हाँ गाइस बताएं, सफिया, अरसलान, कृष्णप्रिया। Sir, my papers are ending on February 4th. योर प्री बोर्ड्स आर एंडिंग ऑन? February 4th. अच्छा। सो मतलब अभी प्री बोर्ड आपका स्टार्ट भी नहीं हुआ है शायद। नहीं नहीं 21st January. एंड कृष्णप्रिया, व्हाट अबाउट यू? I have my last practical exam tomorrow, and then my model exams will start on the 23rd of January till 4th. टिल 4th? Yeah. फिर तो आपको मॉडल एग्जाम के लिए फिर वैसे ही एब्सेंट भी कीजिएगा। अब वो तो क्लास में एग्जाम होता है तो आप लोग तो पता नहीं क्यों क्लास आना छोड़ देते हैं ना। तो वो एक दिक्कत है। 4th के बाद विल नॉट बी हैविंग मच टाइम। चलिए, इसका जितनी भी दिन हो, आई विल, मतलब कुछ तो दिन हमको एटलीस्ट मिलेगा इन विच आई कैन टेक रेगुलर मॉर्निंग क्लासेस, है ना? So at that time I will be able to do that electrochemistry part at least. डीएनएफ ब्लॉक के लिए फिर आपको, मतलब आई विल सेंड यू गाइस नोट्स, आप उसको लिख के रखिएगा, आई विल एक्सप्लेन दैट नोट्स। वो फिर एक दिन में कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है? एंड सी लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑलवेज। ठीक है, सो इफ यू हैव टाइम देन यू कैन वॉच द लेक्चर्स, बट अभी आपके पास टाइम भी नहीं होगा। खैर, ठीक है, नॉट वेस्टिंग मच टाइम हियर, लेट अस स्टार्ट विथ केमिकल काइनेटिक्स। हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन केमिकल काइनेटिक्स? आइडिया है आप लोगों को केमिकल काइनेटिक्स का? सफिया, अरसलान, कृष्ण प्रिया। Yes, sir. व्हाट अबाउट यू गाइस, अरसलान एंड सफिया? Yes, sir. अच्छा, है आपको आइडिया? अरसलान, व्हाट अबाउट यू? यस सर। अच्छा, आई मीन, है आप लोगों को आइडिया पक्का ना? जी, मतलब ये बात खुल के बताएं थोड़ा सा, देन मतलब उसी हिसाब से फिर हम पढ़ाना चालू करेंगे ना। हम्म। एक्चुअली एक सवाल करके जरा दिखाइए, उसके बाद देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। I'm giving you guys 5 minutes for this. ये 5 थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, अगर किसी को नहीं आ रहा है तो फिर क्या करेंगे? 3 minutes एंड यू गाइस विल अपडेट मी, है ना, कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है।
Okay, 30 more seconds. Send me whatever you have done till now. Aslan, Krishna Priya, and Satya, send me whatever you have done till now. कुछ किया आप लोगों ने? अरसलान बताएं. Did you start this question? Yes, sir. अच्छा, आपने किया. सफिया, आपने स्टार्ट किया क्वेश्चन? Yes, sir. Second part question का. अच्छा, कृष्ण प्रिया, व्हाट अबाउट यू? Oh, okay, Krishna Priya sent the answer. Can you show me how you have done, Krishna Priya? I didn't write it down, sir. I just. So, how did you do it? Tell me. Oh, so the rate of a reaction is given by rate of disappearance of N2 which is equal to 1/3 rate of disappearance of H2, which is equal to 1/2 rate of appearance of NH3, and then using that. Okay, that's fine. Arslan and Krishna Priya, can you show me whatever you have done till now? Please, can you send me? Yes, sir. वही starting वाला मैंने लिखा है सिर्फ. स्टार्टिंग वाला लिखा है अभी तक आपने? भेजिए ना, जो भी लिखा आपने भेजिए. Safia, same for you. Sir, I actually don't have my phone, so can I just tell? हाँ जी जी बताएं. Okay. So वही मतलब इक्वेशन लिख के फिर 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ NH3/dt इज इक्वल्स टू 1/3 DH2/dt. फिर 2 को सिर्फ लेके जाके D2 3/2 DNH3/dt. सो 3/2 इंटू वो जो रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 3.6 × 10⁻⁴. नहीं, वेट. चलिए ठीक है. रेट इज इक्वल टू
जी बताए, रेट इज इक्वल टू, बोलिए सफिया। यस सर, 1/2 d NH3/dt 1/2, ओके, 1/2 DNH3 by dt by dt is equals to -1/3 dH2/dt. DH2 by dt. Rate of disappearance of H2 is equals to 3/2 dNH3/dt. एक सेकंड। ठीक है, इसके बाद आपने क्या बोला, नेक्स्ट लाइन? हाँ, सफिया, disappearance of नहीं नहीं H2. नहीं, एक सेकंड, थोड़ा आराम से ना, देखिए नेक्स्ट लाइन जाना है हमें। अरे आई मीन आई नीड टू राइट हियर, और यहीं पे आपने कुछ लिखा है। नहीं सर, नीचे नेक्स्ट लाइन ना, वही तो हम पूछ रहे हैं, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है आपने, बताइए। disappearance of H2 is equals to disappearance of H2 is equal to 3/2 dNH3/dt. 3/2 DNH3 by dt। हाँ, ठीक तो है, ठीक है, 3/2 इंटू 3.6 इंटू 10⁻⁻4, है ना। दिस, ये तो आपका सेकंड का आंसर आया, राइट? यस सर। फर्स्ट वाले के लिए फर्स्ट वाला एक्चुअली मैं कर रही थी सर, 2 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, तो आपको पता है, बट असलान आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं किया है कुछ भी, है ना? करेक्ट है। यस सर, वो तो रूडमेंटरी लॉन्ग। ठीक है, बट स्टिल यू आर हैविंग अ बिट ऑफ आइडिया, है ना, मतलब थोड़ा बहुत आपको आता है। नेगेटिव साइन आपने नहीं लगाया है, बाकी कोएफिशिएंट्स वाली चीजें ठीक है आपकी। सो नाउ थोड़ा सा मेरे लिए हो गया दैट, ओके, सफिया एंड कृष्ण प्रिया आर ऑन a bit different level and you are in a bit different level। अब क्या किया जाए? ठीक है, सो देखिए हम क्या करेंगे ना फिर, ध्यान सुनिएगा। आई विल नॉट राइट द नोट्स डाउन, ठीक है? नोट्स आपको भी लिखना नहीं है, आप बस देखते जाइएगा, एंड देन आई विल सेंड यू गाइस द नोट्स, या फिर नोट्स आपके पास पहले से ही मौजूद रहे, ठीक है? एंड आफ्टर दैट व्हाट यू नीड टू डू, बस जैसे हमने सारा नोट्स मतलब पढ़ाना कंप्लीट कर लिया, देन यू विल राइट द नोट्स आफ्टर द क्लास, एंड न्यूमेरिकल्स उसमें जो होंगे ना, दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑन योर ओन। एक बार क्लास में हम डिस्कस कर देंगे न्यूमेरिकल सारे, बिकॉज आप लोग सबको थोड़ा बहुत आइडिया है ना। लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग द स्क्रीन, एंड हम बताते हैं आप लोग की कि हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस।
Just give me 2 more minutes. See. So see, the notes are here, है ना? तो डे वाइज नोट्स है फिर, ठीक है? एंड आई विल एक्सप्लेन दीज नोट्स, ठीक है? इस तरह से हमारा जो स्पीड रहेगा, दैट स्पीड विल बी अ बिट थोड़ा ज्यादा रहेगा ना, ऐसा नहीं कि when I'm going to write all of these things तो उस टाइम तो ज्यादा टाइम लगता है, but when I'm going to explain these things and things are already written तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन आपका जो टाइम है ना वो जाएगा when you are going to copy this down. And more importantly, I will say that from these notes, try to make short notes. ये जो notes हम आपको भेज देंगे as a PDF form, to try to make short notes from this. Don't write each and every point. ठीक है? जो आपके मतलब का है और जो आप जहाँ पे आपको ज्यादा प्रॉब्लम होती है, those points you have to write, and I will also explain those points in a much greater extent. जब कि हमको जरूरत पड़ेगी, आप लोग बोलिएगा, सर ये कंसेप्ट मेरा उतना क्लियर नहीं है. Can you please elaborate it a bit more? Then I will completely explain by writing each and everything down slowly and slowly. ठीक है? असलान, कृष्ण प्रिया, सब क्या? This would work? Yes or no? Please tell me. Since you guys are having, ठीक है ना? तो देखिए, सबसे पहले what is chemical kinetics? So chemical kinetics is the study of rate of reaction and the factors which influence the rate of reaction and mechanism by which the reaction proceeds. तो यहाँ पे हम लोगों को 3 चीज के बारे में पढ़ना है. First is the rate of reaction, ठीक है? The factors that influence the rate of reaction, ठीक है? तो factors के बारे में पढ़ेंगे, and then we are going to talk about the mechanism at which the reactions proceed. तो reactions के बारे में 3 चीज, एक तो rate of reaction, then the factors, and after that we will be talking about the mechanism. We just see if it is आपका नोट्स अभी तक लेकिन तैयार नहीं हुआ. खैर, now the rate of chemical reaction. So rate of chemical reaction, rate क्या होता है? रेट का जब भी वर्ड आया ना तो डिवाइड बाई टाइम जरूर रहेगा, ठीक है? डिवाइड बाई टाइम क्यों रहेगा? अब लाइक द फर्स्ट थिंग दैट यू एवर टॉक अबाउट with regard to this word rate is the price of something. तो जैसे भी आपने कभी सुना होगा इस तरह से ना कि इस चीज का रेट क्या चल रहा है ना? तो रेट क्या चल रहा है मतलब ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी चेंजिंग विथ टाइम. अभी टमाटर का रेट क्या चल रहा है ना? अभी गाजर का रेट क्या चल रहा है? ठंड आ गई तो सस्ता हो गया होगा, ठंड जाने लगेगी तो महंगा हो जाएगा, ठीक है? सो रेट इज समथिंग दैट डिफर्स विथ टाइम. जब भी आपके पास रेट आ जाए तो डिवाइड बाई टाइम जरूर होगा. So in this reaction, we have A plus B that is giving us C. Now for the reactants, we will talk about a term that is known as rate of consumption or disappearance. So rate of consumption or disappearance of A that is equal to क्या होता है वो? The change in the change in concentration ना divide by time. जैसे कि आपके पास divide by time speed वगैरह आपने पढ़ा, change in position, वैसे यहाँ पे in general what is rate of a particular thing? This change in concentration divided by change in time. So A final minus A initial, and since A is what? It is reactant, its concentration will decrease. अब जब concentration decrease करेगा तो obviously A final will be smaller than A initial, और ये value negative हो जाएगी. But speed can never be negative. Speed आप negative में define नहीं कर सकते. So we put up a negative sign in order to get the whole thing as a positive number. तो हम लोग को number क्या मिलेगा? Positive मिलेगा. So this negative sign, it denotes that A is a reactant. Similarly, when we talk about the rate of consumption of or disappearance of B, we write negative delta B divided by delta time. Again, the negative sign, it is denoting that we are having the change in concentration of B is what? And B is a reactant. Rate of production of C may positive hoga, and C is what? Is our product. In this type of reaction where the stoichiometry is 1, 1, and 1, we don't have any other numbers in the stoichiometry other than 1. And in that case, the rate of reaction will be equal to the rate of consumption of A. जिस रेट से A कंज्यूम हो रहा है उसी रेट से B कंज्यूम होगा और उसी रेट से C बनेगा. So in this case, you don't have to worry about the
You don't have to worry about anything. All the rates are what? Equal, and that is equal to the rate of reaction. But when we are going to have different, क्या देखिए, these are some examples जहाँ पे आपके पास stoichiometry 1 है. So here write the rate of consumption and production of reactant and product for the following reaction. Hg plus Cl2 gives HgCl2. तो rate of consumption for Hg क्या होगा? Negative sign because reactant delta Hg by delta T. Cl2 के लिए negative sign because reactant delta Cl2 by delta T. Rate of production of HgCl2 will be positive because product delta HgCl2 by delta T. ठीक है. उसी तरह से PCl5 और PCl3 का that you can see now. Reaction that involve different stoichiometry, जैसे कि आपके पास A is giving you 2B. यहाँ पे ध्यान से समझिएगा. A is giving us 2B. So rate of consumption of A is going to be still the same. Minus delta A by delta T. Rate of production of B भी क्या होगा? Delta B by delta T. अब ध्यान से सुनिए जरा, यहाँ पे stoichiometry क्यों नहीं आता है? When we talk about rate of consumption of A and rate of production of B, we don't talk about stoichiometry when we are talking about rate of consumption of A and rate of consumption of B, is because जब आपसे पूछा जाएगा ना what is the rate of consumption of A, then you will go wherever the reaction is taking place and you will note down, okay fine, at 1 second A का concentration इतना है, सेकंड सेकंड में ए का कंसंट्रेशन इतना हो गया, थर्ड सेकंड में ए का कंसंट्रेशन इतना हो गया, फोर्थ सेकंड में ए का कंसंट्रेशन इतना हो गया. सो वी विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए. इट डजंट मैटर वेदर ए, व्हाटएवर द रिएक्शन, इट डजंट इवन मैटर. It doesn't even matter A is giving us B or C, because we are there to just look and make an observation that rate of consumption of A क्या है. तो हम लोग क्या लिखना? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A and then we will divide by time. That is why यहाँ पे रिएक्शन का कोई भी रोल नहीं होता when we talk about the consumption of A. ठीक है, इसको ध्यान से रखिएगा. Whenever we talk about consumption and production, please ध्यान से, whenever we talk about consumption and production, stoichiometry has no role in it. But when we talk about the rate of reaction, तो यहाँ पे because for each mole of A we are getting 2 moles of B. ठीक है, for each mole of A we are getting 2 moles of B. That means the rate of consumption of A, it is twice as that of rate of production. यानी कि आपका, अगर हम ये बात करें कि A जो है आपके पास, A जो है वो एक खत्म हुआ, तो B कितना बन जाएगा? डबल बन जाएगा उसका, है ना. B कितना बन जाएगा? डबल बन जाएगा. अगर आपके पास A 2 खत्म हुआ तो B कितना बनेगा? 4 बनेगा. B कितना बनेगा? 4 बनेगा. ठीक है. सो वी राइट रेट ऑफ रिएक्शन एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ A, that will be equal to 1/2 of rate of production of B. थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये लग रहा है कि हाफ क्यों हो जा रहा है. यहाँ तो A gives 2B है और यहाँ पे डिवाइड बाई 2B आ जा रहा है, तो इट इज जस्ट मैथ्स. ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा. जब आपके पास वी आर राइटिंग हियर A एंड यहाँ पे आप लिख रहे हैं B, जब आपके पास 2A है तो आपको 4 मिलेगा. ठीक है, और जब आपके पास मान लीजिए 3 है तो आपको B कितना मिलेगा? 6 मिलेगा. सो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड B? A के बारे में अगर हम देखें तो B को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आपको क्या मिलेगा? A मिलेगा. ठीक है, so that is why rate of consumption of A is half of the rate of production of B. Make sense? Yes or no? Please tell me guys. हाँ जी बताएं. ठीक है. Now rate of reaction क्या होता है? Rate of reaction is rate of consumption और production divided by stoichiometric coefficient. ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा. अगर आपके पास रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ उसका क्या? कंजम्पशन. अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन, सॉरी, अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. दिस इज व्हाट, दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन. मैथमेटिकली इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है. नाउ इफ वी आर हैविंग द रेट ऑफ रिएक्शन आ गया, दिस इज जनरल रिएक्शन. ना, तो जनरल रिएक्शन AA plus BB gives CC plus JD, then the rate will be equal to what? It will be 1/A into minus del A by del T. This is what? Rate of consumption of A, है ना. और C को देखिए फिर हमने ऐसे लिखा. ठीक है, rate of consumption of A divided by A, rate of consumption of B divided by B, rate of production of C divided by C, rate of production of D divided by D. ठीक है, एक बार इसको जरा देख लीजिए. Does this make sense? Everything till here? Yes or no? यहाँ तक समझ में आ रहा है? Yes. ठीक है. Similarly, please see here. Rate of consumption of A जो होगा, as you can see, rate of consumption, इस रिएक्शन को देखिए, इस इक्वेशन को देखिए. Rate of consumption of A will be equal to A times the rate of reaction. ठीक है. तो now यहाँ पे जो आपके पास है ना, this is overall जो भी आपके पास जो पहला पार्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, रेट ऑफ रिएक्शंस. आपको अगर रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ रिएक्शन, if they are going to talk about any of these things, then this is one particular जहां पे सब कुछ दिया हुआ है. Each and everything is here. अगर आपको इसमें से कुछ भी मिल जाए, ठीक है,
आपको डेल सी बाई डेल टी मिल जाए, आपको डेल सी मिल जाए अलग से, डेल टी मिल जाए अलग से, तब आप निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा अगर आपके पास रिएक्शन दिया हुआ है। ठीक है, यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग, आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर दिस प्रोबेबली विल बी हैविंग सम क्वेश्चंस। हाँ, रेट ऑफ कंजम्पशन एंड रेट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है, उसके लिए एक्सप्रेशन लिखना है बस, नथिंग एल्स। देन हियर वी हैव क्वेश्चन, ये सवाल देख लीजिए जरा। हियर वी हैव A plus 2B. A is the reaction. A is giving 2B. Sorry. The reaction A is giving 2B. If concentration of B increases from 5 mole to 10 mole in 2 seconds, then calculate. Now, the wording of questions are important. They're saying it increases. That means they're talking about the change in the concentration of B. Now, for rate of production of B, we'll write delta B by delta T, and they have already given it is going from 5 to 10, so 10 minus 5 divided by 2 in 2 seconds. So we are getting rate of production of B as 5 by 2 mole per liter per second. Rate of production of B we have got, and once we have got rate of production of B, then we can write what the expression rate of reaction is equal to minus del A by del T into half of del B by del T. So this minus del A by del T is what? Rate of consumption of A, and del B by del T is rate of production of B. Now we have this value del B by del T है हमारे पास, इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए. Rate of consumption of A will be equal to half of ROP. That means rate of production of B, which is half of 5 by 2, which is 5 by 4. और वही क्या हो जाएगा, rate of reaction भी वही हो जाएगा. ठीक है, as you can see, rate of reaction directly equal to del B by del T. कितना समझ में आया आप लोग को ये सोनो प्लीज टेल मी? यस यहाँ तक पता है? ठीक है, देखिए दिस इज वन क्लास है ना, अभी इसी को समझाने में उतना टाइम तो नहीं लगा, बट लिखवाने जाते तो फिर इट वुड हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, तो अब व्हेन यू आर गोइंग टू गेट, लेट मी जस्ट सी वंस अगेन, ये क्या भाई, ये नहीं हो रहा है. Let me see, let me once again make the PDF, try to make the PDF print current section. ठीक है, I think I should not write here while it is saving it. Oh, it is done. It is not done. ठीक है, ठीक. So next we have some questions है ना, initially कुछ सवाल. ठीक है, so question is n2 plus, चलिए ये सवाल अगर करके आप देखते हैं, अभी कीजिए जरा. अच्छा, rather than do one thing, आप ये लिख लीजिए कम से कम अभी, for general reaction इतना कम से कम लिख लीजिए. ओके फाइन, ठीक है, ये हो गया. लेट मी जस्ट कॉपी दिस एंड सेंड टू यू गाइस. एक बार हम देख लेते हैं if it is complete or not. It is complete. I have to send to 12C5. Yeah, Krishna Priya. ठीक है, and in a few seconds you will be getting the PDF. ठीक है, write this down, raise your hand once you're done.
Raise your hand once you're done writing this. Now try this question. Send your answers on the Zoom chat once you're done. I hope by now you must have got the PDF for sure. No.
So that's all in chemical kinetics, but I'm getting some answers. Okay, Krishna Priya, let me see. Calculation wise, it was an easy question. Rate of production of NH3, rate of consumption of N2, and oh, and rate of production of H2. That makes sense. Rate of consumption of H2 and rate of reaction is, yes. Yeah, that makes sense. Waiting for Aslan and Krishna Priya. No, sorry. Waiting for Aslan and Safiya. Are you guys stuck? Safiya and Arsalan? Yes, Arslan and Safiya, please tell me, are you stuck or you guys are doing? Sir, I'm doing. लेकिन आना चाहिए, जल्दी आना चाहिए. Even though keep it in fractions, है ना, ज्यादा आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है चीजें. अरे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. Can you send, Arslan, can you send me whatever you have done? So my phone is in charge right now, sir. मेरी Just दादी भी पढ़ रही remove है. it. Sorry, Nothing, sir. sorry what? नहीं सर, मैं फोन चार्ज में है ना अभी. हाँ तो मतलब थोड़ा चार्ज से निकाल के फोटो खींच के फिर से वापस चार्ज में लगा दीजिए. नहीं हो पाएगा. And खैर ठीक है. Safiya, can you please show me, like turn the camera on and show me the answer. What are you doing? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए. अगर बिकॉज कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें. Sir, I actually couldn't do much actually. Sorry, I actually couldn't do much. you could not do much. Why? Just give me a second. Why you could not do much, भाई? ये पहला वाला तो it is quite, क्या है? Rate of production of NH3. ROP of NH3 will be equal to delta NH3 by delta T. Yes or no? हाँ जी बताएं. सही है. Keep your mics on, Safiya and Arsalan.
So what is the delta Yes, NH3? delta NH3. देखिए यहीं पे आप लोग के ना, देखिए वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट ना। इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ना, चेंज ना। ये 5 मोल पर लीटर चेंज हुआ इन 2 सेकेंड्स। क्या दिक्कत है इसमें? So 5 by यही समझ में नहीं आया था। एक सेकंड, यही समझ में नहीं आया था आप लोग को? yes sir. सब नहीं, ठीक है चलिए। खैर, तो अब कीजिए, आगे कीजिए, जल्दी कीजिए, तुरंत आंसर आना चाहिए। 5 बाई, जल्दी बोलो। 5 बाई 2. 5/2, ठीक है। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2, ROC ऑफ N2 कितना होगा? डेल्टा N2 बाई डेल्टा T। नहीं 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 नहीं, डेल्टा N2 है ही नहीं हमारे पास। NH3 के टर्म्स में लिखना होगा ना। ठीक है चलिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? दैट विल बी इक्वल टू, बताइए, माइनस डेल्टा। ठीक है, हम ना जनरली हम मतलब वो नहीं लिखने के बजाय ना हम ये लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इट विल बी डायरेक्टली इक्वल टू द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2। ठीक है, विच विल बी इक्वल टू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 by 3, which will be equal to rate of production of N2, sorry, rate of production of NH3 by 2. Make sense, yes or no? यस सर। ठीक है, अब बताइए रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2, और हमारे पास सिर्फ क्या है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 है। व्हाट इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3? 5/2। सही है? यस पक्का ना? Yes. देखो बिल्कुल, देखो ध्यान से। रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 इट इज इक्वल टू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 by 2। सो इसको लेने से कोई तो मतलब ही नहीं है ना, वी कैन नॉट सॉल्व इट। हमारे पास व्हाट इज द वैल्यू वी आर हैविंग? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 इज इक्वल टू 5/2। 5/2 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 5/4। मेक सेंस? Yes sir. पक्का? यस सर। नाउ रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 की अगर हम बात करें, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ H2 एंड व्हाट वी आर हैविंग, देखिए या तो आप, अब आपके पास रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 भी है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 भी है, तो वही चीजें हैं। आप दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं ना। किसको यूज करना चाहेंगे आप? इसके वैल्यू को या फिर इसके वैल्यू को? NH3 या N2? टेल मी गाइस, क्या यूज करना चाहेंगे? Sir, देखिए rate दोनों ही लिख सकते of हैं। हाँ, बताइए। yes. दोनों ही Yes, लिखा जा सकता rate है, of दोनों के लिए लिख सकते हैं। इट विल बी 3 टाइम्स रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 अगर N2 लीजिएगा आप, और इफ यू आर गोइंग टू टेक NH3 तो ये क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3। डज दिस मेक सेंस, यस और नो? yes sir. अरसलान, सफिया, आपको समझ में आया? जी जी सर, समझ आया। आया ना? ठीक है। बोथ ऑफ सेम थिंग। 3 इंटू रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 क्या हो जाएगा? 15/4। ठीक है, और 3/2 इंटू रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NH3 इज 5/2। 5/2 में आप 3/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 15/4 यहां से भी आएगा। मेक सेंस? यस सर। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 के बराबर है, जो कि रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ N2 है, दैट इज इक्वल टू 5/4। मोल्स पर लीटर पर सेकंड सब में रहेगा, ऑल दी वैल्यूज विल बी इन मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, चलिए, तो इस तरह के सवाल आपको रिपीट करने पड़ेंगे। लेट मी सी इफ आई हैव मोर क्वेश्चंस हियर। यहाँ पे और ज्यादा सवाल नहीं है हमारे पास। ठीक है, इसी सवाल को एक बार और रिपीट कर लीजिएगा आपको। ठीक है, अच्छा, ऑल ऑफ यू गाइस गॉट दी नोट्स ना? नोट्स मिल गए सबको? Yes. ठीक है, तो नोट्स को देखिए, दो चीज आप कर सकते हैं। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज जस्ट टेक अ प्रिंट आउट, है ना, ब्लैक एंड व्हाइट, उसका एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा एंड हैव दैट प्रिंट आउट इन फ्रंट ऑफ यू, और उसी में जो भी आपको स्क्रिबल करना है, वट एवर यू नीड टू राइट इट डाउन, जो भी लिखना है आप उसको लिख लीजिए। एंड आफ्टर द क्लास इज डन, यू रीडू द न्यूमेरिकल्स जो भी हम लोगों ने क्लास में किया है, एंड यू शुड ऑल्सो लाइक ट्राई टू मेक अ शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ थिंग, जो मेन मेन पॉइंट्स है उस क्लास की, आप उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, सो होपफुली इन ईच क्लास हमारे पास एटलीस्ट, जैसे अभी थोड़ा सा टाइम था हमारे पास, सो वी आर एबल टू डू वन ऑफ द क्लासेस, और इसके बाद दो दो क्लास हम लोग एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि एक लेक्चर में दो दो क्लास होते जाए, है ना। एंड इन दिस वे विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, जिसको आप स्पेंड कर सकते हैं किसमें? व्हाइल मेकिंग द नोट्स। शॉर्ट नोट्स बनाइएगा,
नोट्स पूरा कॉपी करने से कोई भी फायदा नहीं है। इफ यू डोंट नो हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स वगैरह तो फिर थोड़ा सा आप मतलब यूट्यूब वगैरह कर लीजिए, है ना। हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स फॉर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री खास तौर से, है ना। इस तरह से इफ यू लाइक इन्वेस्ट अ बिट ऑफ लाइक हाफ एन आवर, बिल्कुल ऐसे इन्वेस्ट करें कि हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए, सो दैट्स इट फॉर टुडे, एंड we'll meet tomorrow with the chapter solutions, है ना। और प्लीज रिवाइज करके आइएगा सॉल्यूशंस हमने कहाँ तक किया था। वी आर डन टिल एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ, ये आप लोगों ने लिखा, हमने बोला था ना नोट्स में से, सॉरी बुक में से लिखने के लिए, पेज नंबर 42-43, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। यस कृष्ण प्रिया, सफिया एंड अरसलान, यस सर। लिख लिया? यस नो क्या बोल रहे हैं आप लोग, कुछ समझ नहीं आ रहा है, साफ साफ बोलिए, लिखा है आपने अरसलान? हाँ सर। पक्का? ठीक है, सफिया व्हाट अबाउट यू, आपने लिखा है? हाँ सर। लिख लिया है ना? हाँ बोल रहे हैं ना, बोल रहे हैं आप?